If you're living in the Delhi NCR region and have questions over what's going to be allowed and not allowed during the G20 summit in Delhi this weekend, well, we have some answers for you. My colleagues Priyanshi and Mukesh are joining us with the very latest. Now, just to break down some of the information for the benefit of our viewers, Mukesh, like you've been reporting, that the most amount of restrictions are in the New Delhi area. E-commerce, food delivery services are going to be suspended. There is Section 144 around the IGI especially. But the police has also come out and clarified that essential services are not going to be affected. And that, people should, however, carry some essential IDs, etc. with them. Can you break down for our viewers the information that we have at the moment on what is allowed, what is not allowed and where? देखिए, बिल्कुल जो लुटियन जोन का एरिया है, जिसे एनडीएमसी एरिया भी कहते हैं, यानी कि नई दिल्ली जिला, वहाँ पर इसेंशियल सर्विस अलाउ होंगी, जिसमें एम्बुलेंस हैं, खाने पीने का सामान है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये अलाउ होंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें अमेजन की डिलीवरी है, जोमेटो की है, स्विगी की है, ये सर्विसेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाएंगी 8 सितंबर, 9 सितंबर और 10 सितंबर को, क्योंकि पुलिस का कहना ये है कि ये सर्विसेज जो है वो कॉमर्शियल सर्विसेज हैं, इसलिए इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमार है, किसी को अस्पताल जाना है या किसी के पास कोई वैलिड रीज़न है और वैलिड आईडी कार्ड है, तो उसको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा ऑटो और टैक्सी नई दिल्ली ज़िले में अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर किसी ने एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक की है और उसके पास बोर्डिंग पास है, तो उसको अलाउ किया जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर ऑटो या टैक्सी नई दिल्ली ज़िले के अंदर अलाउ नहीं किए जाएगी। पूरे नई दिल्ली ज़िले में सेक्शन 144 इम्पोज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम जो वीवीआईपीज आ रहे हैं, उनके लगातार रूट लगते रहेंगे। जहाँ पर G20 समिट होना है, प्रगति मैदान का जो मेट्रो स्टेशन है वो बंद रहेगा, लेकिन बाकी सारे जो मेट्रो स्टेशन हैं वो खुले रहेंगे। लेकिन उनके गेट भी उस समय बंद होंगे जब वीवीआईपी का जो कारकेड है वो वहाँ से निकलेगा। तो बाकी जो मेट्रो स्टेशन हैं उनके गेट भी कुछ देर के लिए बंद किए जाएंगे। जहाँ तक नई दिल्ली स्टेशन की बात है या जो निजामुद्दीन स्टेशन है, वहाँ पर टैक्सी और ऑटो अलाउ किए जाएंगे। लेकिन ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं होगी, यानी 3 दिन के लिए पार्किंग बंद रहेगी। इसके अलावा जो पार्सल एरिया होता है, वो पार्सल सेवा बंद रहेगी। स्टेशनों पर जो बुकिंग होती है फिजिकल स्टेशनों पर, वो बंद रहेगी। और नई दिल्ली इलाके में बिना कारण के कोई भी नहीं घुस पाएगा। यहाँ तक कि जर्नलिस्टों को भी ये कहा गया है कि जिनके पास हैं वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुँचें और वहाँ से उनको शटल मिलेगी और वो घुस पाएंगे। लेकिन जो बाकी जर्नलिस्ट हैं उनको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं किया गया है। ये भी कहा गया है कि एनडीएमसी एरिया में जो मेट्रो सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन जो लोग हैं उनसे अपील की गई है कि अगर उनको नई दिल्ली इलाके में आना है तो वो मेट्रो का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन बिना कारण नई दिल्ली इलाके में ना आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होंगे। यहाँ पर जो होटल्स हैं वहाँ पर तमाम जो स्टेट के हेड हैं वो रुकेंगे। ऐसे में सिक्योरिटी चेक बहुत ज़्यादा होगा और वो पूरी इलाके में घूम नहीं पाएंगे। तो अभी सबसे कहा गया है कि वो इन 3 दिनों में नई दिल्ली इलाके में ना आए। जी मुकेश, आपसे 1-2 सवाल और पूछना चाहूंगी बिफोर वी गेट प्रियांशी इनटू द कन्वर्सेशन कि ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस आपने अभी लिस्ट आउट करे हैं, ये सिर्फ न्यू दिल्ली एरिया के लिए हैं, व्हिच इज बेसिकली द एरिया दैट फॉल्स अंडर द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन. So it's important for the benefit of our viewers, to understand that when we say food delivery services are going to be suspended in New Delhi, we mean specifically just the New Delhi Municipal Corporation area, not all of Delhi, because that's a very large area. Mukesh, दूसरा सवाल ये है कि entry and exit points from Delhi. Now, the traffic police has clarified that heavy vehicles को रोका जाएगा. They will not be allowed to cross the Delhi border. But what about the common citizen? Because we know that offices, for instance, are only closed in the New Delhi area. What about common citizens who want to travel across the NCR region? Will there be restrictions for them?
देखिए, ये पुलिस ने पहले ही साफ किया है कि नई दिल्ली इलाके में जो पाबंदियां हैं वो रहेंगी, लेकिन बाकी जो पूरी दिल्ली है वो पहले की तरह खुली रहेगी। पहले की तरह मॉल्स खुलेंगे पूरी दिल्ली में, जो बाजार हैं वो खुलेंगे, लेकिन जो पाबंदियां हैं वो केवल नई दिल्ली में हैं। नई दिल्ली इलाके में खान मार्केट और कनॉट प्लेस का जो मार्केट वो बंद रहेगा, तो यहाँ पर लोग नहीं आ पाएंगे। हालांकि वैसे पूरी दिल्ली में चाहे वो सरकारी दफ्तर हों, प्राइवेट दफ्तर हों या फिर स्कूल्स हों, ये पूरी दिल्ली और एनसीआर में लगभग बंद रहेंगे। तो जो लोग हैं वो पूरी दिल्ली में घूम सकते हैं, लेकिन नई दिल्ली में वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नई दिल्ली में आने के लिए आपको वैलिड रीज़न देना होगा। और अगर आप वहाँ पर रहते हैं या आपकी कोई वहाँ पर शॉप है, तभी आप वहाँ पर जा पाएंगे, लेकिन वैसे आप पूरी दिल्ली में घूम सकते हैं। पूरी दिल्ली में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नई दिल्ली में आपको 3 दिन के लिए नई दिल्ली को अवॉइड करना होगा। All right. So even the borders are not sealed, Mukesh, from what you're explaining to our viewers. I think this is very crucial information because there's so much ambiguity really around what's going to be permitted and not. I want to quickly bring in Priyanshi into the conversation. Priyanshi, what does the common man really need to know in terms of travel? Because we know that cab services, for instance, are restricted in the New Delhi Municipal Corporation area, and I'm stressing on not calling it New Delhi because it's misleading. But we know that, you know, as far as traveling out of Delhi is concerned, what about trains and flight services? What about buses? What do people need to know about public transport? Well, Rishika, as you've mentioned, that it's important to point out that this is the NDMC area. There were fears that is it going to be a lockdown-like situation in the national capital, but that's not the case. Everywhere we need to stress that it's not a prohibition of anything, but a restricted use of anything. To your question, whether flights are suspended, yes, close to 200 flights have been suspended from Saturday to Sunday because the airport will be used by several delegates who might be coming in. The Palam airport will also be used and not just the Indira Gandhi International Airport. So flights are definitely affected. If we talk about buses, now interstate and intrastate buses both will be functional. That's what the Delhi police has confirmed. But the movement of these buses within the NDMC area or the New Delhi Municipal Corporation area will be restricted. So what that essentially means that this particular control zone of NDMC will be restricted. So if you need to get from point A to point B and the NDMC area gets in the middle of that, then you have to take an alternate route, probably take a longer route to get to point B, because you can't cross the NDMC area without having a valid reason. Now, what are these valid reasons under which you can cross the NDMC area? Under emergency conditions, which means if you have a medical emergency, ambulances, of course, are allowed to go wherever they want to, take whichever routes they want to. On the other side, if you have any valid passes, any valid hotel bookings. So there are several hotels in the NDMC area. If you need to go to the airports as well, so you have to show your boarding passes, you have to show your hotel booking IDs, your booking details to be able to cross that area. So with these with these sort of details, you can access the NDMC area, but overall the common Delhi resident will not be allowed to use the NDMC area and they can take alternate routes. The other point that we've repeatedly mentioned, that food delivery, Zomato, Swiggy, Amazon, Flipkart will not be allowed only in the NDMC area. Cabs will also not be allowed in that area, but otherwise in the rest of Delhi, it will all be allowed and there will be no lockdown-like situation. That's what the Delhi police is repeatedly stressing on.